All right. Hello, everyone. Welcome to this series of Polity. In our previous lecture, we dealt with the salient features of Indian Constitution, and now the very important topic of the Constitution of India, that is schedules. See, if you are preparing for NDA examination, the topic of schedule is very important because multiple time they have asked questions on schedules, and there are chances that in coming examinations also the schedule topic will be important from your written examination point of view. Okay? So what is schedule first of all? See, if I have to divide or classify constitution into some certain parts, then if you see, if it's constitution, see, constitution can be divided into, first of all we have preamble in the constitution, preamble. Okay, then we have schedules in the constitution, and then we have parts in the constitution, and lastly you will also find that there are certain amendments in the constitution. This is how the constitution can be classified, right? You first of all you have preamble, then schedules, then parts, and then the amendments in the constitution. अब preamble में क्या है? Preamble में क्या है वो हम already देख चुके हैं. The all the important keywords in the preamble we have already dealt with. Like for example, कि India is a socialist, sovereign, secular, democratic republic that we have seen. So important keywords of the preamble we are already aware of, right? After preamble, what comes? Schedules. Schedules act as a, you can say, a database in the constitution. They are like an index in the constitution. Like in every book we have an index, right, which gives you an idea about what is there in the book. In the same manner, if you see, the schedule work as a database of the constitution. See, in constitution, if you see, there are topics, there are concepts, right? But the constitution article wise if you go, that does not give you much of data, right? The articles will give you only the concept, right? But certain points you require certain data to support that particular article, but the article itself cannot contain all the information, and that's why certain facts or certain data or numerical data that is put under the schedule part, right? So schedule act like a database of the constitution. We will see that once we start discussing all the schedules, you will come across the analogy, right? Then after schedules, we have parts in the constitution. What parts do in the constitution? Parts are nothing but a chapter in the constitution. They are chapters. There are total 25 parts in the constitution right now, right? Originally, at the time of commencement of the constitution, it had only 22 parts. It had only 22 parts, but after successive amendments, we have added 3 more parts in the constitution, and today the number of total parts, or you can say chapters in the constitution stands at 25, right? And then we have amendments in the constitution. We amendment kya hai? What do we mean by amendments in the constitution? See, in simple terms, amendment means making changes in the constitution, right? Article 368 of the constitution provide for the amendment in the constitution. If you can see 368. Okay, so article 368 in the constitution provides for the amendments in the constitution. Now what do we mean by amendments? As I told you already, that making changes in the constitution. What kind of changes? See, you are either adding something to the constitution, or removing something from the constitution, or making changes in the existing provision of the constitution. This total amounts to the amendment of the constitution, right? So this is how the constitution can be classified. It has preamble, it has schedules, it has parts, and the amendments. See, so far the constitution has been amended 105 times. So far we have amended the constitution for 105 times, right? And now if you look at preamble, we have already dealt with the preamble, and today will be dealing with the schedule part of the constitution. And once we are done with the schedule part, we will move to the actual parts of the constitution, that is actual chapters of the constitution. And then we will discuss some of important amendments, not all the amendments. All the amendments are not required to go into that depth. We will require only few amendments. That amendments we will be dealing with, right? I hope this is clear. After having this, we will be moving to
the topic that is schedules. So today we will be dealing with schedules, right? First of all, there are total how many schedules? There are total 12 schedules in the constitution. How many schedules? 12 schedules in the constitution, right? First to 12th. See, in the original constitution, when constitution was commenced, like in 1949, it was completed, and in 1950, it was enforced, right? So at the time of commencement of the constitution, right? In short, in 1950, in the original constitution, you had only 8 schedules. You have how many schedules? 8 schedules. And with successive amendments, we have added 4 more schedules to the constitution. And that's why today the total number of constitution, the schedules in the constitution, they stands at 12, right? So we that one thing which you should remember. So let's start with the schedules. And the very first schedule talks about the list, lists of the states. Yeah, awkward is missing. Lists of the states and the territories. That means this schedule gives you the list of total states, number of states, and name of those states and other territories in that particular schedule. Right? For example, there are how many states and union territories in India? If I ask you, there are 28 states and 8 union territories in India. This is very important. Earlier, there used to be 29 states, but in 2019, after the bifurcation of Jammu and Kashmir, or the status change in the status of the state, that union territory, the number of states dropped down to 28 from 29. And with this, again, 2 more union territories were added, and the number was had gone to 9. But after the merging of 2 another union territories like Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, the number of union territories again came down to 8. So right now, today, as we record this lecture, today it stands at 28 states and 8 union territories. The number might change in future as well. There are chances, because it is in the hands of the parliament that they can make a state a union territory, or making a union territory a state. The numbers could be shuffled again in future. Could be, there is possibility. Anyway, that was full. There is a list of total states and union territories in India. The second schedule talks about the emoluments and salaries. The emoluments and salaries. See, the emoluments and salaries of whom? It is of the important constitutional positions like President of India, Judge of a Supreme Court, and important chairman of important organizations. All those constitutional positions, how much salaries will they get, and how many emoluments other than the salaries they will have, that all mentioned in schedule number second. That is of schedule. Third schedule, if you see, it is about oaths and affirmation. If you see, many of our constitutional positions and many of our chairmen and all, when they hold, or when they start their journey as a government official or as a constitutional positionary, then they have to take a certain oath, and all those oaths and affirmation are mentioned in schedule number 3. After schedule number 3, we have schedule number 4. That is, it talks about allocation of seats in the Rajya Sabha. So see, this is very important, and multiple times they have asked question on schedule number 4, that is allocation of seats in Rajya Sabha. See, before I go into the nitty-gritties of this schedule number 4, let me make you aware of the election process of Parliament. See, you have to only listen to me carefully. See, there are 2 houses in the Parliament. One is Lok Sabha, okay, and the other is Rajya Sabha. The name itself suggests that the Lok Sabha represents the Lok, that means people, and Rajya Sabha represents the Rajya, that means the states. That means the Lok Sabha is a representative body of the people of India. It altogether represents the people of the India, and Rajya Sabha is a representative body of entire states of the country, and that's why the name itself suggests it is Lok Sabha and this is Rajya Sabha. But how the elections take place as long as the Lok Sabha and the Rajya Sabha is concerned? See, elections in the Lok Sabha are done directly
the representatives of the Lok Sabha are elected directly by the people, right? Every 5 year we go and vote for our representative. In short, we call it as a member of parliament, or you can also say खासदार. हमारे एरिया का जो खासदार होता है, see, one thing has to be very crystal clear. The खासदार or the MP of your area represents you in the center, and the आमदार, that means the MLA of your area, represents you at the state. The Amdar is for the state, Khasdar, that means MP, is for the center. So you have your representation at state as well in the form of your MLA, and you have your representation at the center level as well in the form of your MP. Whoever seats in the Lok Sabha and Rajya Sabha, they all are MP. Whoever seats in the Lok Sabha and Rajya Sabha, they all are MP, because Lok Sabha and Rajya Sabha, they are a parliament. And if there is a member of parliament का short form क्या होगा? MP. Right? So either he is a member of Lok Sabha or he is a member of Rajya Sabha, they all are MP. But the process of election of both the houses is different. How it is different? Different in the manner that the members of Lok Sabha are directly elected by the people. अब लोगों की सभा, लोक सभा है, लोगों की सभा है, इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कौन चुनेंगे? लोग चुनेंगे. That means if a person is directly going and voting for a person, that is called as direct election, right? But in case of Rajya Sabha, we do not elect the members of Rajya Sabha. However, we elect the elected MLAs of our state assembly. They elect the MP of Rajya Sabha. That means, in short, if I have to tell you, the state legislatures, they elect the members of Rajya Sabha, and not directly, or not the people directly. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे राज्यों के एमएलएस को चुनते हैं, और उन एमएलएस का जो लेजिस्लेचर है उस स्टेट में, वो लेजिस्लेचर उस स्टेट से कौन एमपी बनेगा राज्यसभा में, उसके लिए वो वोट करते हैं. सो हमने किसी को वोट किया है, वो किसी को वोट कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. That is indirect election. We are not directly going and voting for a Rajya Sabha MP. The members of the state legislatures, they are voting for the Rajya Sabha MP, and that's why the election manner or the election process of Rajya Sabha cannot be called as a direct election. In fact, it should be called as the indirect election, right? So this has to be very crystal clear that the members of Lok Sabha are directly elected by the people, and the members of Rajya Sabha are indirectly elected by the people, or you can say they are elected by the state legislative assemblies, right? And that's why we can say they represent the states, as the name itself suggests. All right. So this was basic, important things which you have to understand in order to know more about the schedule number 4. Now there might be a question in your mind that अगर राज्य सभा के MP indirectly elected या state legislatures elect करते हैं, तो किस स्टेट से कितने एमपी राज्यसभा में जाएंगे? फॉर एग्जांपल, राज्यसभा का जो टोटल अभी स्ट्रेंथ तो 250 है, बट इफ यू लुक एट द present actual members, number of present members in the Rajya Sabha, you will see there are about 245 members. 245 members. In Rajya Sabha, the total number of members right now, they are 245. Now, out of this 245, 12 members are nominated by the president. Out of this 245, how many? 12 members are nominated by the president. Then if you deduct, or you can say minus 12 from 245, how many you have is 233. How many you have is 233. So right now, if there has to be an elected member or indirectly elected member in Rajya Sabha, the total number of seats for that kind of election is 233, because out of 245, 12 are nominated by the president. We will look into that. We will see that separately. But right now, only one thing you have to keep in your mind, that out of 245, 12 members are nominated by the president, and remaining 233 members, they come from various states. अब ये जो 233 का नंबर है, इसमें कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, that has to be decided by the respective population of that state. राज्यसभा से कितने किसी स्टेट से कितने एमपी राज्यसभा में जाएंगे, ये उस स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. See, higher the population, larger the number of seats in Rajya Sabha,
So you can say in case of Rajya Sabha, there is no equal representation for the states. And indeed, the total number of seats, that how many seats a state will get, it completely dependent on the population of the state. For example, see, the populous, the most populous state in India is, yes, indeed it is UP, right? So Uttar Pradesh, you have the largest number of population, largest number of people, right? So obviously then the largest number of share in Rajya Sabha will be from how, from where? Uttar Pradesh. Like for example, out of these 233, 31 members they come from Uttar Pradesh, 31 members they come from UP. And if you see smaller state like Goa, Manipur, Tripura, all these states, smaller states which have very small population, from there only one member each they come from the state, only one member. Because see, UP 31 members, Goa 1 member, Tripura 1 member, Manipur 1 member, Maharashtra 19 members. So it depends on the population of the state, right? Very simple. But if you go to the, if you compare this with the American Constitution or the American Upper House, or you can say the American Senate. See, in America there are two houses like what we have in India. In India we have Lok Sabha and Rajya Sabha, the lower house and the upper house, right? In a same way, US also has two houses. One is House of Representatives, that is you can tentatively can compare it to the Lok Sabha, and they have another house that is Senate, that can be compared with the Rajya Sabha of India, right? But in their Senate, see, there are 50 states in America. How many states? 50 states. And there are 100 number of members in their Senate, in fact, in their Rajya Sabha. But if you see, 50 states, 100 member, each state has two members. Each state has how many members? Two members. It means they have equal representation to each state, and there is no, you can say, not discrimination. There are no anomalies, you can say, that uh, the larger share is given to the states that has a larger population, and the lower share is given to the state that has low population. That is not that does not happen in the US. In the case of US, their Senate, each state has equal number of members, that is two, and 50 states, two members equal to 100 members. But that is not the case of India. In India, we do not have equal representation to the states. In fact, or instead, you can say, the number of Rajya Sabha seats will be dependent on the population of the state. I hope this much of detailed discussion is enough to understand schedule number 4. So अब इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है, उन स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाएंगे, ये उस स्टेट की पॉपुलेशन बताएगी. समझ में आ गया? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. अब किस स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट्स मिले हुए, इसकी पूरी लिस्ट आपको शेड्यूल नंबर 4 में मिलेगी. वेरी सिंपल. इफ यू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज एन ऐप. आप वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? उस ऐप में आपको, बहुत सारे ऐप है वैसे तो, वो एक अपना जो अपना जो कैपिटल है, वो अशोक चक्र का कैपिटल जो है वो उस पर साइन है और तिरंगा है बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐप है. उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिखेंगे पार्ट्स, शेड्यूल्स, preamble. So whenever you click into parts, if you go to the schedules, then open schedule number 4, you will see the entire list. सारे स्टेट्स की लिस्ट है और उसके स्टेट के आगे नंबर दिखा हुआ है कि उस स्टेट से कितने राज्यसभा सीट्स जाएंगे. ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट शेड्यूल नंबर 4. Moving on to another schedule, that is schedule number 5th and schedule number 6. More or less they are comparable. See, 5th schedule says about the administration and control of the scheduled areas in the scheduled tribes. See, who are scheduled areas and who are scheduled tribes? See, there are certain communities in our country, there are certain tribes in our country which have their customs in their origin. Even today they follow the same customs, right? There are certain areas in about 10 states of India, there are scheduled areas, and there are scheduled tribes in multiple states of India, right? These are the areas or tribes which are scheduled in the constitution. That's why they are called as scheduled areas and scheduled tribes. They are specifically mentioned in a schedule. That's why they are called as scheduled areas and scheduled tribes.
See, these communities require such a law process which will not impact their own culture or custom, and that's why they have been given a considerable amount of autonomy to conduct their own affairs as long as their local matters are concerned, and that's why such areas are identified under a fifth schedule, right? But they do not recognize under fifth schedule. They do not recognize any kind of schedule area or schedule tribes in four states, that is Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. These are the four states where the scheduled areas and scheduled tribes are not recognized under the fifth schedule. Then you will ask me, then where they are recognized? They are recognized under sixth schedule. सिक्स शेड्यूल. सो फिफ्थ शेड्यूल में ये चार स्टेट्स नहीं है, ये चार स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के, इनके जो ट्राइब्स है दैट दैट ऑल टुगेदर दे आर अनदर डिफरेंट ट्राइब्स विच हैव देयर कस्टम एंड कल्चर, दे आर यू कैन से अभी भी वो अपने ही कस्टम और कल्चर में चल रहे हैं, और उस हिसाब से उनको एक सेपरेट ऑटोनॉमस काउंसिल दी गई है इन दिस फोर स्टेट्स. ठीक है, दिस फोर स्टेट्स ट्राइबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम the tribal or the schedules areas in another states, and that's why they are given another important separate schedule, that is sixth schedule, right? And this is only for ATMM. ATMM का full form क्या है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. याद रखना ये चार स्टेट्स शेड्यूल नंबर फिफ्थ में नहीं है, जबकि शेड्यूल नंबर सिक्स में है. That you have to remember, right? Another schedule of the constitution, that is seventh schedule. See, seventh schedule in the Indian Constitution gives the provisions of the lists. Lists. See, there are lists in the schedules. See, as you can see, there are all the schedule talks about data, and data only, right? Now the list. Which kind of lists? Lists: union list, state list, concurrent list. Now, what these lists are all about? See, as we have already discussed before in the salient features of Indian Constitution, if you remember one salient feature of Indian Constitution, there we have mentioned that Indian Constitution gives you the federal system with unitary bias. Now, whenever we say federal system, that means sharing of powers, distribution of powers. That means there are certain powers which are exercised by the union government by way of parliament, and there are certain powers which are exercised by the state governments by way of their respective state legislative assemblies. For example, I'll give you an example. See, if you look at the subjects like defense or international relation or communication or finances, international trade, they all are the union subject. You will not see any state making law on defense. No, it is the prerogative of the union government. It is the prerogative of the Parliament of India, the union legislature, right? So subjects are clarified, very clearly divided. If you see, for example, state का, अभी मैं state का अगर देता हूँ तो state में there are subjects like police, law and order, land, agriculture. ये सारे जो मैटर्स आते हैं, ये सारे मैटर्स किधर आते हैं? ये सारे मैटर्स स्टेट लिस्ट में आते हैं. You will not see the union government making laws on the police matters, or the union government making laws on the land matters, or the union government making laws on the agricultural matters. No, they are the prerogative of the state government. So in short, what I mean to say is there is a power sharing, there are power distribution or a subject distribution. Certain powers are exercised by the union government, so certain other powers are exercised by the state government. Now who will decide? Where it is mentioned कि कौन से सब्जेक्ट्स पे यूनियन का प्रभुत्व होगा और कौन से सब्जेक्ट्स पे स्टेट का प्रभुत्व होगा, ये कहाँ है मेंशन? ये मेंशन है शेड्यूल नंबर 7 में. ये मेंशन है कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 7 में. शेड्यूल नंबर 7 में एक क्लियर लिस्ट दी गई है जिसमें यूनियन में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे. देखो अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट मतलब दोनों, बोथ वेयर बोथ कैन एक्सरसाइज देयर पावर. इसमें ऐसे सब्जेक्ट से जिस पर यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है. समझ में आ गया? ऐसे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पर्सनल मैटर्स, marriage, divorce, inheritance, all these matters are put under, this is just an example, there are many such matters. All these matters are put under concurrent list, and if the matter is under concurrent list, then both the union government and the state government both are empowered to make laws on the subjects mentioned in the concurrent list.
तो अभी आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता क्या? किसी एक सब्जेक्ट पे अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों ने एट अ टाइम लॉ बना दिया तो फिर क्या होगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन किसका लॉ चलेगा? तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में सेंटर का लॉ चलता है। सी, कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स पे बेशक उस पर स्टेट भी लॉ बना सकते हैं और उस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है, बट अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया तो ऐसे केस में द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और यू कैन से द सेंटर विल प्रिवेल। प्रभुत्व किसका होगा? सेंटर ने बनाए हुए लॉ पर। इसका मतलब इन शॉर्ट यू कैन से दैट even on the concurrent list who have the prevailing power or who have the ultimate control, the central government, the union, right? So we have union list specifically where you will find subjects mentioned in the union list where the only union government is empowered to make laws. For example, defense, communication, international relations, all these subjects you will find in union list. There are about 100 subjects in union list. About how many? 100 subjects in union list. Then you have state list जहां पर सिर्फ state governments law बना सकते हैं, वहां पर लगभग you will have 67 subjects, right? And then you have concurrent list जहां पर दोनों लॉ बना सकते हैं। अब इस बात से एक बात तो साफ है कि मोर पावर इज गिवन टू द सेंटर और यूनियन लिस्ट। if you see how more number of subjects they are in union list, and apart from having more number of subjects in union list, they also have a prevailing power on the subjects of concurrent list. It make our constitution leaned towards the union government or the central part of the government, center government, right? And that's why we say that we are a federal system with unitary bias. Yes, federal system means is indeed we share a power, but with unitary bias. That means more powers are given to the union government vis-a-vis the state government. Is that very clear? And that's why you can say the Indian constitution is quasi-federal in nature and not a complete federal, because there is not exact distribution of power. The distribution of powers is more in favor of the union government. And that's why instead of calling it as a federal country, we call it as a quasi-federal constitution. Is that very clear? Either you call it as a quasi-federal or you can call it as federal system with unitary bias. They one and the same thing. However, that is another thing. But as long as 7th schedule is concerned, you have lists: union list, state list, and the concurrent list. I hope this is very clear to you, students. Right? Then there comes the schedule number 8. In 8th schedule, we have official languages. See, in India, there are recognized 22 official languages: Hindi, Marathi, Telugu. All these are important official recognized languages in India, put under schedule number 8, right? Then comes schedule number 9. It talks about validation of certain acts and regulation, for example, land reforms, and also related to judicial review. That we will see in detail later on. But for example, right now you only have to remember that all the land reform laws, they are put under 9th schedule. Okay? We will discuss this particular thing in later on whenever we will be diving deep into the parts section of the constitution. Then we have 10th schedule. 10th schedule talks about anti-defection law. See, what do we mean by anti-defection? First of all, what do we mean by defection? See, defection अगर हम हिंदी में ऐसे कहे तो या फिर मराठी में यहाँ पर हम बोलते हैं की बंडखोरी केली. बंडखोरी केली म्हणजे काय केलं? बंडखोरी म्हणजे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेले. एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने को क्या बोलते हैं हम? बंडखोरी बोलते हैं. और उसी को इंग्लिश में हम डिफेक्शन बोल रहे हैं, डिफेक्शन, right? So whenever the members, the elected members, whether they are the MLAs of your state or they are MPs of the union, right? It is applicable to all those representatives, either MLA or MP. For all elected representatives, it is applicable, right? So whenever a person who was elected on a particular ticket of a particular political party, and after getting elected, if he switched the party, if he or she switched the party, then the anti-defection law will be applicable to them. That means they will be disqualified. What will happen to them? They will be disqualified. See, in anti-defection you have four parameters, or you can say four conditions in which this anti-defection law can be applied. See, this was not there in the original constitution. We have added it in later on in the constitution. Okay? Anti-defection law in 1985, anti-defection law had come.
Under this law, as I already told you, first criteria is whenever a particular person switches a party, अगर वो किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनकर आया था और उसने फिर उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा. एंटी डिफेक्शन लगेगा इसका मतलब है वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. इफ इज एन एमएलए, ही विल नो लॉन्गर रिमेन एन एमएलए. इफ इज एन एमपी, ही विल नो लॉन्गर रिमेन एन एमपी. ही विल बी डिस्क्वालीफाइड. इज दैट वेरी क्लियर? तो जिस पार्टी टिकट से चुनकर आए हैं उस पार्टी को छोड़कर अगर किसी और पार्टी में जाते हैं मीन भाई, तो एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी एप्लीकेबल टू देम. दिस इज वन क्राइटेरिया. अनदर इज इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट आपने देखा होगा बहुत सारे अपक्ष उम्मीदवार भी होते हैं जो किसी भी पार्टी टिकट से नहीं होते, बट वो चुनकर आते हैं. और अगर वो चुनकर आते हैं और चुनकर आने के बाद वो अपक्ष है, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, they haven't elected the contested the election on a particular party ticket and they are elected. अगर वो चुनकर आ गए और उसके बाद अगर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा या फिर किया, तो भी उस पर भी एंटी डिफेक्शन लगेगा. समझ में आ गया? तो इट्स नॉट अबाउट वन, इफ यू आर फ्रॉम वन पार्टी एंड चेंजिंग टू अनदर पार्टी, इट इज ऑल्सो अबाउट यू बिलोंग टू नो वेयर एंड अगेन ज्वाइनिंग अ पार्टी while being an MP and MLA, then you will be disqualified. Anti-defection law will be applicable to that. This is second. Third criteria. Third criteria is all about if any nominated member switch to any political party. As I already told you, out of these 233 members in Rajya Sabha, or 245 members in Rajya Sabha, sorry, 245 members in Rajya Sabha, 12 are nominated by the president. They are not elected, they are nominated by the president from various fields: art, literature, social science, etc. They are nominated members. If the nominated member joins a political party, what will happen? Even there this law will apply, but there is a condition. The nominated members have this liberty of 6 months. If they join a political party within the duration of 6 months after being made a member of the house, then they will not be the anti-defection will not be applicable to them. But if they join a political party after the expiry of 6 months, then anti-defection law will apply even to them and they will be disqualified. This is third. And what is fourth? Fourth criteria is if you take a stand or vote against your party direction, पार्टी ने दिए गए डायरेक्शन के खिलाफ या उनके डायरेक्शन के खिलाफ वोट अगर आपने किया हाउस में और उनके स्टैंड, उन्होंने जो स्टैंड लेने बोला वो स्टैंड आपने नहीं लिया, तो भी एंटी डिफेक्शन लगता है. इसका मतलब साफ है, हमारे देश में या हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप में या स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टी ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है रादर देन पर्सनल ओपिनियन. राइट? सो अगर आप पार्टी के ओपिनियन के खिलाफ जाकर वोट करेंगे या स्टैंड लेंगे तो आप पर एंटी डिफेक्शन भी लग सकता है. दैट इज फोर्थ कंडीशन. In under these all four condition, anti-defection law is applicable. We will see it into detail whenever we'll be discussing specifically about anti-defection law in our upcoming chapters. Right? There we will see more nitty-gritties about this particular topic, that is anti-defection law. Right? Then we have 11th schedule. 11th schedule talks about Panchayati Raj. See, 11th schedule was added in 1992. 1992, there was a remarkable, or you can say very significant amendment to the constitution, that is 73rd constitution 1992. And after this 73rd constitution, Panchayati Raj institutions were constitutionalized. They were made compulsory part of the constitution, and now it was imperative, or you can say compulsory on every state to come up with a 3-tier Panchayati Raj system. And after that amendment, we have added certain parts in the constitution, and along with those parts of the constitution, we also have added the one schedule in the constitution, that is 11th schedule, in which you will see the list of all subjects where the Panchayati Raj or the panchayats of the local area are empowered to make laws. मतलब पंचायत में पंचायत कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है, पंचायत का जुरिस्डिक्शन क्या है, उन तमाम चीजों की लिस्ट आपको 11th शेड्यूल में मिलेगी. और उसी तरीके से पंचायत तो हो गया विलेज एरिया के लिए, it is for rural areas, but what about the urban areas? Urban areas mein you will have municipalities. In rural areas you have local bodies called as panchayati raj, panchayats, and in urban areas the urban areas the local bodies are known as municipalities. Right? So म्यूनिसिपालिटी के हाथ में क्या होगा, उनके क्या सब्जेक्ट्स है, उनका जो क्या प्रेरोगेटिव है, वो 12th शेड्यूल में
ये भी हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपालिटी। ठीक है, सो बैक टू बैक अमेंडमेंट्स किए थे 73rd एंड 74th। 73rd से हमने 11 शेड्यूल ऐड किया है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 12 शेड्यूल ऐड किया है। 11 शेड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत एंड द 12 शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्युनिसिपालिटीज। इन शॉर्ट बोथ द शेड्यूल टॉक्स अबाउट लोकल बॉडीज, right? Panchayats as well as municipalities, they are known as local bodies, right? But panchayats are for villages and the municipalities are for the urban areas, right? So these are our schedules in the constitution. I hope this is very clear to you. You have understood all the schedules, and if you want a satta on this कि कैसे याद रखे, दिस इज वेरी सिंपल। देखो, कैसे याद रखने का सवाल ही नहीं उठेगा अगर आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। देखो, हमने बहुत डिटेल में शेड्यूल्स पढ़ लिए, बहुत डिटेल में। आपको हर शेड्यूल के बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग दी है और उन तमाम डिटेलिंग आपको बहुत काम आएगी क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एनडीए ने प्रीवियसली पूछे हैं बेस्ड ऑन द शेड्यूल्स, राइट? बट राइट नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड द सट्टा इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स मतलब लिस्ट ऑफ टेरिटरीज। E for emoluments, A for affirmations, R for Rajya Sabha. This way, TEAR, tiers of old PM, है ना? Tiers of old PM, इस तरीके से ये एक सट्टा है। अगर आप अच्छे से करोगे तो सट्टा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बट इफ यू वांट टू रिमेम्बर बाय अ शॉर्टकट, देयर इज अ शॉर्टकट, tiers of old PM, ठीक है? सी, these are certain previous year questions based on the schedules. You can easily see on your screen, right? See, this was question asked. The fourth schedule of the Constitution of India deals with. See, openly they have asked question कि कौन सा schedule क्या बोल रहा है. Very simple questions they ask, and the cost benefit ratio is very high. देखो, schedule 12 schedule करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बट उस पर सवाल आ जाते हैं और बहुत बार सवाल आए, उसमें से कुछ सवाल हम देख भी रहे है ना। ये रिसेंट सवाल है, बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है। एनीवे, फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है रे बाबा, मेरे को बताओ। प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, दिस इज 6th शेड्यूल। ट्राइबल एरियाज की बात 6th शेड्यूल में होती है, इफ यू रिमेंबर। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। इंडीड, राइट? यस, ओके, वेरी गुड। सो मुझे बताओ, ये 4th शेड्यूल में आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता सर। दिस इज 4th शेड्यूल, so this has to be correct answer. अब मुझे बताओ सी वाला क्या बोल रहा है? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये कौन सा शेड्यूल है बच्चा लोग? 8th। कौन सा है, कोई बोल पाएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे 8th। बोल भी क्या? नहीं, ये 7th है। Sorry, और ये sir, जो आप बोल रहे हो 8, वो इसका है। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में आता है। समझ में आ गया? चलो पीछे एक बार आते हैं वापस, इसको क्लियर कैसे करेंगे? क्लियर नहीं हो रहा है, ये कैसे क्लियर होगा ये भाई? चलो एनीवे, यहाँ पर देख लो, बिना इसका ही देख लो। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। Second schedule, emoluments and salaries. Third schedule, oaths and affirmation. Fourth schedule, allocation of seats. अभी इस पर क्वेश्चन देखा हमने। फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज इन 80 mm की बात करता है। सेवन शेड्यूल लिस्ट की बात करता है। एट शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। नाइन शेड्यूल लैंड रिफॉर्म एक्ट्स की। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन। 11th पंचायती और 12th म्युनिसिपालिटीज। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स व्हाट? प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, नो। ये 6th शेड्यूल है अगेन। देखो यहाँ पर भी वो सेम सेम स्टेटमेंट दिया। देखो, अलग अलग साल में पूछे हुए सवाल है, ये अलग अलग स्टेटमेंट दिए। मेरे को बताओ, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है क्या? yes sir, यस, वेरी गुड, 7th शेड्यूल। इसका मतलब बी हैज टू बी द आंसर। अब मेरे को बताओ, रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस किधर है?
यहाँ पर भी देखा आपने 8 8th. शेड्यूल में, यस यहाँ पर भी देखा आपने सेम स्टेटमेंट. एंड देन कम्स प्रोविजन दैट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. देखो एंटी डिफेक्शन हमने 10 शेड्यूल में देखा, बराबर. Sir. हाँ, तो एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल, लिस्ट आर इन 7 शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज इन 6 शेड्यूल. और पूछा क्या है, लिस्ट पूछा है ना. शेड्यूल 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिस्ट है, तो ये आंसर इसका होना चाहिए. एक ये और क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, इसको पढ़ो और इसका जवाब दो. वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शाल नॉट अप्लाई. देखो नॉट को कैसे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है कि आप सवाल पढ़ते वक्त ये देखो कि वहां पे नॉट है या नहीं. घाई में हम वो नॉट नहीं देख पाते और गलत आंसर देके आते हैं. सो वेरी बी वेरी अटेंटिव इन द एग्जाम हॉल और व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. सी, रीडिंग अ क्वेश्चन वेल इज हाफ डन. सवाल ठीक से समझ जाना आधा आंसर है. काफी स्टूडेंट सवाल में ही गड़बड़ कर देते हैं, उसको ठीक से पढ़ते नहीं. ठीक है, यहाँ पे नॉट शैल नॉट अप्लाई पूछा है. द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज इन. मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5th शेड्यूल में कोई 4 स्टेट एक्सक्लूड किए गए जो 6th शेड्यूल में. बस वही 4 स्टेट मेरे को बताओ, मैंने अभी बताया था आपको. असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. वेरी गुड. वो ATMM याद है ना आपको. यस. आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. तो बताओ मेरे को, आसाम त्रिपुरा इसमें आ गया, मेघालय मिजोरम इसमें आ गया, इसका मतलब 2 and 3, बराबर. Yes, sir. 2 and 3 हैज टू बी द आंसर. अब इसको कैसे याद रखेंगे, आसाम सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर ये ATMM में नहीं है ना. नहीं है. हमेशा याद रखना ATM में मनी नहीं होता, हमारे ATMs में मनी नहीं होता. तो वैसे याद रखो आप ATMM को कि ATMM में मनी नहीं है, ATM में मनी नहीं है, इसका मतलब मणिपुर नहीं है. तो क्या रहेगा फिर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. समझ में आया क्या. जी सर. तो ATM में पैसा है क्या अपने, मनी है क्या. नो. नो मनी इन द ATMs. ओके, अब देखो ये एकदम इजी सवाल है. Which of the following is correct in respect to the total number of states and union territories in India? अभी पहले तो मेरे को ये बताओ कौन सा शेड्यूल में ये बात हो रही है. लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन से शेड्यूल में है. फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल ऑब्वियसली राइट. और उसी शेड्यूल में मैंने आपको नंबर दिया कि आज हमारे देश में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है. तो बताओ. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, वेरी गुड. 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. देखा, ये भी शेड्यूल का सवाल था. अब यहाँ पर भी देखो ये भी शेड्यूल का सवाल है. ये तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि पेयर्स मैच. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच. करेक्टली कौन से मैच नहीं हो रहे वो आइडेंटिफाई करना है. देखो एक शेड्यूल में लैंग्वेजेस है क्या, बराबर है क्या ये. शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है, ये बराबर लग रहा है करे. यस Yes, सर. right. हाँ, इसका मतलब ये करेक्टली मैच हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, बराबर. समझ में आ गया. सेकंड क्या बोल रहा है, द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन. Right, sir. नो. ये ओथ्स एंड अफर्मेशन सेकंड शेड्यूल में है क्या, नो. फिर कौन से शेड्यूल में है. थर्ड. थर्ड शेड्यूल में है, यस. देखो ओथ्स एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में है. सेकंड शेड्यूल में सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स. देखो पहले पैसे की बात हो रही, पहले पैसा फिर ओथ. समझ में आया कि नहीं आया. जी सर. ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है, रुपया. समझ में आ गया. तो पहले पैसा और फिर ओथ्स एंड अफर्मेशन. समझ में आ गया. तो सेकंड शेड्यूल में सैलरीज की बात हो रही है और थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात हो रही है. सो ये ऐसे अगर याद रखोगे तो याद आ जाएगा. और दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है, मेरे को पता फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट है क्या. यस सर. यस, दिस इज करेक्टली मैच. और 10 शेड्यूल में प्रोविजन एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है क्या. यस Yes. सर. यस, दिस इज आल्सो करेक्टली मैच. सो नॉट करेक्टली मैच कौन सा है इसमें, सिर्फ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, एंड दैट इज आवर आंसर. Because they have asked which of the following does not correctly match.
Is that clear, students? Everyone with me? अब इससे पता चलता है कि शेड्यूल इज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल अगर समराइज किया जाए इस टॉपिक को, तो आपको ये याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम 4 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो प्रियम्बल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा शेड्यूल से, जो आज हमने डिस्कस किया। इसके बाद पार्ट्स आएंगे और फिर अमेंडमेंट्स। समझ में आ गया? प्रियम्बल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक ब्लूप्रिंट है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंस क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में प्रियम्बल में उसने देकर रखा है। दूसरा है शेड्यूल। शेड्यूल की मैंने बात की, शेड्यूल में सारा क्या है, डेटाबेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि देश में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, कौन से स्टेट से कितने नंबर राज्यसभा सीट में जाते हैं, कौन कौन सी ओथ लेता है, किसको कितनी सैलरी है, यूनियन के पास क्या क्या सब्जेक्ट है, स्टेट्स के पास क्या क्या सब्जेक्ट है, पंचायत के पास क्या क्या सब्जेक्ट है, म्यूनिसिपैलिटीज के पास क्या क्या सब्जेक्ट है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में कितने हैं, तमाम चीजों का डेटा ये कहाँ पे है, शेड्यूल्स में है। तो शेड्यूल्स को आप डेटाबेस कहेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो शेड्यूल्स के पास सारा डेटा होता है, समझ में आ गया। और शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डेटा रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था नया नया, तब सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। अलग अलग सक्सेसिव हमने अमेंडमेंट से उसको और 4 शेड्यूल ऐड किए, टोटल 12 शेड्यूल्स आए। और वो टोटल 12 शेड्यूल क्या है हमने पढ़ा, और उसके ऊपर किस तरीके के सवाल इंडिया ने पूछे हैं अब तक, वो भी हमने देखा। तो इसका मतलब साफ है कि शेड्यूल्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। और जिस तरीके से आपको शेड्यूल्स को कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझ में आ गया होगा, आ गया है। एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस, वेरी गुड। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बीच में पूछ सकते हैं। और कल हम वापस से 140 को इसी टाइम पर मिलेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारे एक्चुअल पार्ट्स, एक्चुअल चैप्टर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर आर्टिकल वाइज। समझ में आ गया? सो टुमारोज टॉपिक विल बी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल बी डिस्कस in our next lecture. Until then, take care, study well.